Good evening. Welcome once again back at Unacademy Plus. I'm your educator at Unacademy Plus, Sumati Sharma. Welcome all of you back to my session. So, what is Plus subscription? Well, and Unacademy Plus is India's largest learning platform. The number of courses which are taken up here, and you can opt for any of the course that you want to go in for. You get this platform to learn a lot. You get the unlimited live and recorded sessions, and the educators here help you to their best. My name is Sumati Sharma, friends, and I welcome you once again. I am a postgraduate in art stream. I have got an experience of teaching the students from grade 9 to 12, subjects like social studies and English. I've been into the education sector, this teaching profession from uh, past 20 years. I've also worked as a principal and vice principal of various renowned schools of Rajasthan. I've taught aspirants for CAT, MAT, CLAT, BPO, BBA, etc. I'm a passionate cyclist, a runner, a swimmer. I'm a lover of adventure sports, and I love to take up challenges in life too. So, प्लस सब्सक्रिप्शन क्या देता है आपको, क्या मिलता है यहाँ पे? You get a lot here. You get the daily live classes to attend here, where you can chat with your educator, you can engage yourself with your educator, talk, ask your problems, your doubts, your queries, even when the class is going on. You have the courses which are structured and streamlined, and they're personalized if you want by your educator. You get to attend the live tests and quizzes. They're prepared according to your exam syllabus, and you get to also attempt on the regular mock tests, the quizzes, and get a detailed analysis of your performance. So, when I'm talking about the educators, you are getting that aid, that assistance where no other learning platform can provide. So the schedule works according to you, the way you want it. The sessions which are taken up here are just not restricted to one particular language. That is English or Hindi or mix of both. But you can attend the session where more than 12 other languages our educators take up these sessions. You can get your doubts cleared, you can interact with your educator, you can also answer the live polls, the tests, the quizzes, even the the practice sessions which are going on, or even when the class is going on, you get engaged in discussions, you can answer those questions, and you can place yourself on the leaderboard. Now, these live tests and quizzes help you a lot to understand whether you are on the right track or not, or whether it measures your progress. You also, because you are attending a lot of mocks here, you are taking up a lot of practice sessions, the tests, the quizzes, etc. So you also get a detailed report of and the in-depth analysis of every mock that you have attended. The topic-wise analysis is that's what you get. Even the time spent per question. Sorry, sorry. So with comparative stats, you get a detailed analysis. The learning material is undoubtedly quality, of very high quality. If you want to practice apart or besides your live sessions, you can do that.
me. So you can get your hands on, you have the accessibility to our learning material, and you get a quality content here. You can practice whenever, wherever you want at as per your own convenience. So my friends, what are we waiting for? The best deal and the best offer is right here in front of you. If you want to opt for a 12 months course, which is of 17,500, then you can avail this 10% discount and pay only 15,750 if you use my referral code SUMATI. But if you wish to go in for 24 months course, which is for 21,000, then you can pay only 18,900 and avail this 10% discount by using my referral code, which is SUMAI Sumati. So grab this deal and go for it. Roots 3, part 3. So we saw a lot of roots in the last 2 days. And today, since this is our third session on roots, and roots are very, very important, as I told you, to build up your vocabulary, to understand whether the word is positive or negative, word has a positive meaning or a negative meaning. Only if you are able to make out in that given word what the root is. And once you have detected, once you have found out that root word in that word, सबसे पहले आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव वर्ड है कि ये पॉजिटिव वर्ड है. And then it will be very easy for you to correlate it within that paragraph or with the other sentence. So neo is our first root for the day. That is neo, which means new, कुछ नया या recent, अभी का. Neo is new or recent. So it has to be definitely a positive root. Neoblastic, which means having the nature of a new growth. कुछ नई चीज, नई ग्रोथ होना हमेशा. There we make use of, कुछ soil होती है, कुछ land होती है, जो हम neoblastic के reference में use कर सकते हैं, because they have the nature of new growth every time. And also some kind of business, some kind of production, that also is a new growth. So there also we can make use of this word neoblastic. Neocene, belonging to the tertiary period. Now, 3 तरह के periods होते हैं आपके: primary, secondary and tertiary. Primary is related to your agricultural period. Secondary is manufacturing, and tertiary is agriculture plus manufacturing. That is tertiary. So belonging to the latest, belonging to the now, belonging to the recent times, belonging to the tertiary period. That is where we can make use of Neocene. Neo-cosmic, cosmic आपका universe से related है. So neo-cosmic, relating to the present known world and races. Neocracy, cracy गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. क्रेसी, तो गवर्नमेंट जो नई है और जो इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स, इनके रेफरेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि जो नए ऑफिशियल्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट. तो गवर्नमेंट बाय न्यू, which is by inexperienced officials which are not experienced.
So neocracy, neo-Darwinism, a new form of Darwin's theory. Neogenesis, a new formation or regeneration of tissue, नई tissues की growth होना body के अंदर, or new formation of tissues is neogenesis. Neomorph, a new form not derived from an ancestor, जो अपने ancestors से carry forward नहीं किया है. It has not been brought down by our ancestors or through our ancestors. That is called neoform, a new form not derived from an ancestor. Neomorph. Neon, a gaseous element used in neon lights. So we can see a lot of neon lights on the roads these days. Neophyte. Neophyte is a new convert, a novice, a beginner, a person who is an amateur, but he is a beginner, a novice, a new convert. That is where we make use of neophyte. Neologism. Neologism is a formation of a new word. एक नया word, that is new word, is known as neologism. Neomania. Neomania is the festival of new moon. जब full moon होता है, new moon होता है, तब एक festival होता है, कुछ states में उसको celebrate किया जाता है. So that is the festival of new moon is called Neomania. Neolatry, the worship of the new or the novelty, something which is very high level or of very elite. Okay, so worship of the new or the novelty, कोई नई चीज की worship होना, किसी भी नया किसी चीज का birth होना, उस चीज की worship होना, neolatry. Even if it is a system, in the system, if there's a new system which has taken birth, right, that is where we can refer this word neolate. Neolithic, relating to the era when polished stone implements were used. जब stone पत्थर के बने हुए औजार या implements use किए जाते थे, उस era को, उस age को Neolithic age बोलते थे. Neology, the use of new words in the language. ये आप अभी यही कर रहे हैं, जब आप synonyms कर रहे हैं, आप नए words कर रहे हैं, root सीख रहे हैं, तो आप new use of new words in language यही कर रहे हैं. You are improving, you are increasing, or you are getting to know neology. LEG, leg. Leg का मतलब होता है law. So wherever you have LEG root in the words, एकदम पता लगा लीजिए कि कुछ law से related है. Something is related, कुछ law से लेना देना है, कुछ rules, कुछ principles, कुछ law से यहाँ पे लेना देना है इस word के अंदर. So legal, legal means lawful, according to law. Okay. Legalism, strict adherence to law. Legalism, law को strictly follow करना. Legalistic, strictly according to law, law के मुताबिक होना, right? So legalistic is something to drive on the left hand side of the road is legalistic by the government. So strictly according to law. Legality, the quality of being strictly legal. कोई बहुत ज्यादा हर काम या हर चीज में लीगल इश्यूज जब इन्वॉल्व करता है, तब उसको हम लीगैलिटी या क्वालिटी, उसकी एक क्वालिटी मानते हैं कि लीगैलिटी.
लीगलाइज, टू मेक लॉफुल, किसी चीज को लॉ के अकॉर्डिंग बनाना, जैसे टू लीगलाइज सिटीजनशिप। तो आप सिटीजन किसी कंट्री की लेनी होती है तो उसको हम लीगलाइज कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है टू मेक लॉफुल, टू लीगलाइज सिटीजनशिप। Legacy. Legacy is a gift of property left by will and inheritance. हमारे ancestors या हमारे जो fathers, grandfather, forefathers जो हमें hand down करते हैं या जो हमें उनसे मिलती है, that is called as legacy. That is called as inheritance. जो हम inherit करते हैं, जो हम उनसे जो कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट इज लेगेसी। लिगेट, लिगेट इज अ डेलीगेट जो लॉ से रिलेटेड होता है, एन ऑफिशियल मैसेंजर और एन एम्बेसडर। तो हर कंट्री में दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स होते हैं, राइट? सो दैट इज known as, that person is known as a legate. Legislatress, a female member of the legislature. तो जो legislature की female members होती हैं उनको legislatress कहा जाता है। Legislation, enactment of law by the legislature. legislature के थ्रू जो law बना है, enact हुआ है, pass हुआ है, उसे legislation कहते हैं। Legitimate, something related to law, according to law. For example, a legitimate business, a lawful business. Legitimize, to make legal, to make lawful. Illegal, illegal is unlawful, illegitimate, that is illegal. Hyper, hyper वर्ड ही बहुत क्लियर है, जब सब सुनते हैं इसको। हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव होना, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी। हाइपर हम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वो बहुत हाइपर है। तो ही डजंट, ही इज नॉट स्टेबल, ही इज ऑलवेज जंपिंग, टॉकिंग, रोमिंग, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही इज सो हाइपर। तो स्पेशली टीचर्स अपनी क्लासेस में बच्चों के लिए यूज करती है, that boy is very hyperactive, right? So energetic unusually energetic is your word. Hyper is your root word. Hyperosmia means very small, बहुत छोटी सी कोई चीज, hyperosmia. Hyperostosis, हाइपरोस्टोसिस का मतलब है थिकनिंग ऑफ बोनी टिश्यू। तो किसी टिश्यू, जो बोन के ऊपर जो टिश्यूज होती है, वो जब स्ट्रेंथन होती हैं, जो थिकन होती हैं, दैट इज वेयर वी यूज हाइपरोस्टोसिस। हाइपरनिया, हाइपरनिया इज अ रैपिड ब्रीदिंग, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, वेरी क्विक एंड फास्ट ब्रीदिंग, हाइपरनिया। Hyperopia, hyperopia is long sightedness, दूर की नजर, which is foresight, insight, prudence, caution, circumspect. ये थोड़ा नेगेटिव जो हैं इसके सिमिलर वर्ड्स उस तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, like foresight is a positive, insight is also positive, prudence is, it is wiseness या wisdom. Caution थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, circumspect भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो हाइपरोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस, बहुत दूर की देख लेना, बहुत दूर का देख के इसको समझ लेना, दैट इज हाइपरोपिया। दैट इज प्रूडेंस, इनसाइट, circumspect.
हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया आपकी आईसाइट से रिलेटेड होता है. ओके, हाइपरमेट्रोपिया इज अगेन लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की नजर. हाइपर एक्टिव is very active or very agile. So that boy in my class is hyperactive, very active, is very agile. Hyperemia. Hyperemia is increase of blood. खून का बढ़ना, बॉडी के अंदर खून का बढ़ना is increase of blood is hyperemia. Hyperacidity, excessive acidity, बहुत ज्यादा acidity होना is hyperacidity. Hyperalert, very alert, quite alert, very, very cautious. So that is hyperalert. Hyperarid means very, very dry. A place, किसी जगह या किसी भी space के लिए हम use करते हैं hyperarid. So hyperarid is used for the places or the some destinations, some places that they are called as hyperarid. Like deserts जो होते हैं बहुत hyperarid होते हैं. So they are very, very dry. Hyperbaric. Hyperbaric is gas at a greater pressure. So gas कहीं किसी factory में, किसी industries में, which is put up at a greater pressure. There we use this word hyperbaric. Hyperendemic, high incidence of. So you can really relate this to COVID-19. Hyperendemic. Pandemic is worldly spread. And this is hyperendemic is the high incidence of COVID-19, which we all are experiencing. Hyperacusia. Hyperacusia is abnormally acute hearing, unable or hard of hearing. बहुत कम जहां जिसको सुनाई देता है उसके लिए हम यूज करते हैं hyperacusia. Hyperalgesia. Hyperalgesia is excessive sensitivity to pain. बहुत ज्यादा sensitive होना pain के लिए is hyperalgesia. Hyperopia. Hyperopia is again farsightedness and hypermetropia. Cautious, insight, prudence, right? Hyperbole. Hyperbole is exaggeration and it is a figure of speech. जैसे मैंने अपने previous session में बताया था, parts of speech, there are 8 parts of speech in English. ऐसे ही figures of speech भी होती हैं English में. For example, metaphor, simile, alliteration, pun, okay? ऐसे ही hyperbole is one of the figure of speech in English, which means exaggeration, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना. उसके लिए हम hyperbole word use करते हैं. To exaggerate, hyperbolize, to state or to speak a lot. Hypercritical means too critical, too bad. Hyperion. Hyperion refers to a Greek god, also known as Apollo. Hyperion is a Greek god, also known as Apollo. Hyperdimensional, which has many dimensions, बहुत सारे dimensions, directions होना, that is hyperdimensional. Hyperirritability, too irritable, बहुत ज़्यादा irritable होना, बहुत ज़्यादा frustrate होना, that is hyperirritability. Okay, our next route is a very nice route, MATR.
MATRI, MATER, which means mother. MAT, matron. Matron is used for a married woman, especially a dignified and a sober one. A woman in charge of domestic affairs or nursing in a school, college, etc. Matron. तो जो इंचार्ज होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या डोमेस्टिक अफेयर्स में, एंड इवन अ मैरिड वुमन, उनके लिए ये वर्ड मेट्रन यूज किया जाता है. मैट्रियार्क, फीमेल रूलर ऑफ द फैमिली. ऐसे ही आपका फादर या मेल रूलर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज पेट्रियार्क, और ये इसका रूट है PATR, पेट्रियार्क. तो मेट्रियार्क, MAT आपका रूट है, एंड फीमेल रूलर ऑफ द फैमिली. Matrilineal. Matrilineal is descendant on the mother's side, maternal side, like your maternal aunt, maternal uncle, mama, mausi, right? They are from the mother's side, the maternal side. So that is where we use this word matrilineal. Maternity is relating to motherhood, parenthood, or motherliness. So relating to motherhood is maternity. Alma mater. I belong, or I have come from an alma mater which has given me traits and helped me build up into a very good human being. Alma mater. I owe everything to my alma mater, means it is referred to a school, a college, an institution where a person went to. So I owe everything, whatever I am, I owe it to my alma mater. Whatever I am, I owe it to my alma mater. Matricide, killing of one's own mother. We saw this in my previous session. हमने side रूट किया था, which means to kill, और हमने बहुत सारे sides देखे थे, right? So again, matricide, killing of one's own mother. Maternal, again related to motherly, carely, affectionate, tender, warm. That is maternal. LUD, LUS, which means play. Okay, so that is where this root word comes into being, which means play. Ludicrous. Ludicrous means absurd, ridiculous, foolish, comical, farcical. बहुत अच्छा word है. Farcical का भी वही meaning है. Absurd, amusing, nonsensical, preposterous. He always acts so preposterously when he is in the party. So he acts preposterously, adverb, but preposterous आपका adjective है यहाँ पे. So, which means very nonsensical, ridiculous, bizarre या insane, पागलों की तरह हरकत करना, बहुत ज्यादा nonsensical way में behave करना, foolish, comical, that is ludicrous, that is farcical, preposterous, bizarre, right? Allude. Allude is referred into indirectly. किसी को indirectly refer करना, मतलब कुछ hint देना. To imply, to insinuate. हम कुछ hint देते हैं, right? So that is where we make use of this word allude. To hint at, to imply, to insinuate. Allusion. Allusion is
indirect or a passing reference, also known by these words: citation, inference, hint. Illusory. Illusory is something which is deceptive. बहुत ऐसी चीज जहां पे आप बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज को बहुत जल्दी से, दैट इज डिसेप्टिव, दैट इज इल्यूजरी. हम रोड पे जाते हैं, राइट? वी ड्राइव ऑन द रोड, वी वॉक ऑन द रोड, एंड from a long distance we see in the middle of the road that we find as if there is water ahead, right? But it is really not so. So that is illusory, that is deceptive, that is based on illusion, and it is not real. हिंदी में एक वर्ड है मृग मारीची, तो उस वर्ड को, that is illusory, that is deceptive. Delusion. Delusion is a false belief or impression, a misunderstanding, a fallacy. That is, delusion is a misunderstanding or a false belief. Your next root is LEG, LEC, LEX, which means to read or to speak. Legible. Legible is something which is readable, which is intelligible, understandable, decipherable, comprehensible. So his handwriting is so legible. उसकी handwriting कितनी neat, कितनी legible है, कितने अच्छे से पढ़ने में आती है. His handwriting is so legible, that is so readable. Antonym, illegible, which is not readable. तो जैसे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है, राइट? व्हेन दे राइट प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है, ज्यादातर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इलेजिबल होती है, व्हिच इज नॉट रीडेबल. Lecture. Lecture is a talk, a sermon, a speech, a harangue. A harangue is a lengthy and an aggressive speech. Lexicon. Lexicon is a dictionary. Legendary. Legendary is fictitious but well known. Fables, storied, mythical. तो स्टोरी बुक्स में, नॉवेल्स में लेजेंडरी कुछ रोल्स, कुछ कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया जाता है एज लेजेंडरी, which are fictitious, which are not real, but they are well known. Okay, your next root is LOCU, LOQU, LOGUE, LOGY, LIX. Again, it means to speak or a speech. Elocution. Elocution, आप schools में, colleges में elocution contest होते हैं. So, diction, pronunciation, voice production. Elocution competition is a speech competition, a pronunciation or a voice production. Eloquent. Eloquent is a person who is very expressive. He is eloquent by nature. Means he is very fluent. He is very persuasive. He is very articulate, very coherently spoken, very powerful in words, powerful in speaking, not powerful in strength. Okay? Powerful in speaking and well expressed is an eloquent person. Loquacious. Loquacious is wordy, talkative, garrulous, rambling, long-winded. Effusive means बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत सारे कुछ वर्ड्स को ऐड करके
और उसको बहुत डेकोरेटिव बनाना, दैट एक्स्ट्रावेगेंट जिसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, very effusive, very garrulous. So he is loquacious. तो हम यहाँ पे we can take the example of Shashi Tharoor's speeches. He is very loquacious in his speech. Antonym क्या है? जो बहुत कम बोलता है, taciturn, iconic, antisocial, aloof. Dialogue, a conversation, a discussion, chat, interview, a discourse. Prologue, pro मतलब पहले, पहले आना. So जो भी चीज आपने प्रोलॉग्स नॉवेल्स में, बुक्स में, जब हम पेज खोलते हैं, जब हम कवर पेज खोलते हैं, फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आपके प्रोलॉग दिए होते हैं, मींस इंट्रोडक्शन दिया होता है बुक के बारे में, राइट? So that is called prologue. Introduction or a preamble, preface, foreword, opening, prelude. Antonym is finale, end. Colloquial. Colloquial is very informal, conversational. बातचीत की लैंग्वेज जो होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज जो होती है, that is called as colloquial. Vernacular, dialectical. Antonym is formal, formal speech and informal speech. So informal speech या normal language की बातचीत जो होती है, that is colloquial. Grandiloquent. Grand is very big. Loquent जो words में बहुत ज्यादा, बहुत heavy words का इस्तेमाल करता है. So pompous, pretentious, long-winded, overbearing, verbose, magniloquent. And person who uses very less words is straightforward, direct. Antonym. Prolix. Again, जो पहले आ रहा है, prolix is wordy, verbose, flowery, rambling. So his speech, or he gave a prolixity speech last night, means full of words, flowery speech, prolix. Antonym compact, concise, epigrammatic, brusque. Analogous. Analogous is same, similar, equivalent, parallel, corresponding, related. Analogous. Interlocutor. Interlocutor कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है. Interviewer, questioner, interrogator. जो इंटेरोगेशन करता है, जो क्वेश्चन करता है, जो इंटरव्यू करता है, सवाल करता है, जो he or she is known as interlocutor. Circumlocute. Circumlocute. Circumlocute is to avoid, to avert, किसी को avoid करना. Circumlocute, to bypass, evade, shun, fend off. Epilogue. Epilogue means afterward, postscript, conclusion या sequel. किसी के बाद किसी कोई चीज जो बाद में आती है, that is epilogue. जो पहले आती है, जो introduction होता है, that is prologue. Prologue is a foreword, beginning, prelude, introduction, opening. Soliloquy. Soliloquy is a speech, a discourse. कोई speech देना, that is called as audience के सामने, that is a soliloquy. Magniloquent, boastful, pompous, bombastic. So again, the example of Shashi Tharoor.
Okay, very bombastic in his speech, very pompous. He uses magniloquence, or he uses magniloquent words. More is your next root. MORI, MORT, ये आपका negative root है. MORI, MORT, which means death. Morbid, morbid का मतलब है morose, something which is gruesome, very ghastly, macabre, sickly, ghastly. That is morbid. So there was the killing or the murder of that girl was morbid. It was gruesome. It was macabre. It was ghastly. Amortize. Amortize is to repay, to pay off. Mortuary. Mortuary is a place where dead bodies are kept temporarily. Moribund. Moribund is something जो खत्म हो रही है, जो decline हो रही है, जो end के करीब आ रही है. That is moribund. Declining, dying, waning, dilapidated. Moribund. Mortality. Being mortal. Loss of life on a large scale, the death rate. IMR. आपने सुना होगा IMR. इंडिया में infant mortality rate जिसे कहते हैं, मतलब हर 1000 लाइव बेबीज के ऊपर जो डेथ होती है, ओके, per birth, that is infant mortality rate, IMR. So that is, mortality is being mortal. Mortify, to humiliate, to degrade, become gangrenous, means to become very deep, to get down to very low level, spoiled, ruined, embarrassed. Mortal is again which is related to human being, and so human beings are mortals, but God is immortal. Uska opposite hai immortal. Mort, mob, या mom, which means to move. बढ़ना, आगे बढ़ना, right? So positive root, momentum, drive, trust, energy, force. So the car picked up the momentum after putting the gas or filling in the gas. So the car picked up the momentum after filling in the gas. Momentous, that was a momentous occasion. Something having great importance, historic, significant, vital, meaningful. That was a momentous occasion. Motion, movement, signal, gesture, action, proposition. Antonym is stillness. कुछ motion में है और कुछ still है. Remove, to take away, confiscate, eradicate, get rid of, eliminate. Antonym is to add करना. Mobile is not your, which you talk on, that not that mobile, but movable, portable, transportable, itinerant. A person who travels from one place to another is called as itinerant. And mobile, again, because you take the mobile and you can talk. Sorry. So mobile is you can walk and you can talk. So yes, of course, mobile, that mobile also. Antonym is fixed. Plaque, PLAC, PSC, PEAC, peace, calm, please, calm, peace. All
positive words, right? So Pacific. Pacific is something which is very soothing, which is calming, which is very tranquil, very calm, placid, untroubled, composed, restful. The boat sailed on the placid waters or in the tranquil waters. Antonym, turbulent, warlike, belligerent, bellicose. ये आपका बेली रूट हमने किया था, उससे ये वर्ड्स बने हैं. बेली का मतलब होता है वॉर या फाइट, और उससे ये वर्ड्स बने हैं आपके बेलिकोस एंड belligerent means quarrelsome, warlike. Placate. Placate means to pacify, to calm down, to soothe. किसी चीज को बहुत सूद करना, calm down करना, to placate. And opposite क्या होगा? To enrage, गुस्सा दिलाना, to enrage. Implacable. Implacable is pitiless, जिसको दया नहीं आती, right? Unsympathetic, pitiless, unable to be persuaded, merciless, callous, ruthless. Placid. Placid is easygoing, calm, peaceful, docile, composed. So she is of docile nature. She is of very calm, quiet, composed nature. Complacent. Complacent is जो इंसान satisfied होता है, जो मिलता है उसी में ही satisfaction होता है. That is complacency. Complacent आपका noun है. Complacency is your verb. Complacency is your adjective. Satisfied, unworried, self-righteous. Antonym is anxious. Pacify. Pacify, to appease, soothe, to calm down, to mollify. Antonym again, गुस्सा दिलाना, to enrage, to aggravate, to antagonize. Pacifist से कहते हैं जो पीस लवर होता है, जो शांति का दूत जिसे कहते हैं, शांति का दूत, पीस लवर, एंटी वॉर, एंटी वायलेंस. Conscientious, person who doesn't like war, who doesn't like fights. Conscientious. Pacifist. Pact is a deal, a treaty, a concord, an agreement, or an accord. That is pact. Appease, to mollify, to satisfy, to soothe, placate, to calm down. Appease, किसी को मनाना, किसी को soothe करना, किसी को calm down करना is appease. Okay, so now this, ये बहुत सारे रूट, बहुत सारे वर्ड्स हैं इस रूट से. PHOB, PHOB, जो जिसको कहते हैं फियर. ओके, बहुत तरह के फियर होते हैं, बहुत तरह के डर होते हैं. किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को से डर लगता है, किसी को पानी पीने से भी डर लगता है, किसी को पानी नहीं पीने से भी डर लगता है, किसी को कार में बैठने से डर लगता है, किसी को प्लेन में बैठने से डर लगता है, राइट? किसी को डायरेक्शंस का भी डर होता है, किसी को so there are lot of fears and the list is really very long, but let's look at some of the phobias here. So phob से phobia, आपका जो word बना है इंग्लिश का, means fear, right? So claustrophobia is fear of closed places, बंद जगह जो होती हैं, जिनको बंद कमरों में, बंद जगहों में रहने में घबराहट होती है, डर लगता है, they suffer from claustrophobia.
एगोराफोबिया, एगोराफोबिया इज ओपन प्लेसेस, खुली प्लेसेस या खुली खुली जगह जो होती हैं उन जगहों से भी लोगों को डर लगता है. So they suffer from agoraphobia. Argophobia, fear of work, काम करने का डर होना, मेहनत से जो जी चुराते हैं, काम से जो जी चुराते हैं, दे आर अर्गोफोबिया. निक्टोफोबिया, जिसको रात से डर लगता है, किसी को दिन से भी डर लगता है, तो फियर ऑफ नाइट इज निक्टोफोबिया. सिटोफोबिया, फियर ऑफ फूड, खाने का भी डर होता है, कुछ लोगों को खाने का भी डर होता है, सिटोफोबिया. ट्राइकोफोबिया, फियर ऑफ हेयर, बहुत सारे किसी के बाल होते हैं या देखते हैं तो उनको देख के घबराहट होती है, डर लगता है, so that is trichophobia, fear of hair. Xenophobia, fear of strangers या foreigners, जिनको strangers या foreigners से डर लगता है, they are xenophobia, they have xenophobia. Panophobia, panophobia is a form of melancholy marked by groundless fears. जिन डर का कोई बेस नहीं है, बस डर लगता है, कुछ लोगों को बस डर ही लगता है हर चीज में, जिनको हर चीज में डर लगता है, they suffer from panophobia. Astrophobia, astrophobia is fear of space, celestial space. कुछ लोग जो प्लेन में, एरोप्लेन में, फ्लाइट में जाते हैं, कुछ को प्लेन का फेयर होता है, कुछ को स्पेस का, सेलेस्टियल स्पेस का भी डर होता है, दैट इज एस्ट्रोफोबिया. ऑक्लोफोबिया, फियर ऑफ मॉब, जिसे आप भीड़ बोलते हैं, क्राउड. ओके, ऑक्लोफोबिया, भीड़ का डर. कोई लोग कभी जब भीड़ में होते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, तो दे सफर फ्रॉम ऑक्लोफोबिया. एरिथमोफोबिया, fear of numbers, math से डर लगना, arithmophobia. So I'm arithmophobic, that means I'm scared of math. Astrophobia, astrophobia is fear of thunder and lightning. बिजली चमकना और बादल गरजना, उनसे भी बहुत लोगों को डर लगता है. Astrophobia, they suffer from astrophobia. Arachnophobia, एक मूवी आई थी, उसका नाम ही एरेक्नोफोबिया था, जिसमें स्पाइडर्स के ऊपर वो मूवी थी. इट इज द पीपल हु आर स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स, दे सफर फ्रॉम एरेक्नोफोबिया. एथिलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, कुछ लोगों को परफेक्ट ही हमेशा दिखना होता है, बनना होता है, तो कहीं वो इम्परफेक्ट नहीं हो जाए किसी भी चीज में, ऐसा एक डर होता है, fear of imperfection. They suffer from ethylophobia. Etichophobia, etichophobia is गिरने से, फेल होने से डरना, etichophobia. Bibliophobia, fear of books, किताबों से डर लगना, that person suffers from bibliophobia. Bathmophobia, fear of stairs or steep slopes. तो चढ़ाई करने से और स्टेयर से चढ़ना उतरना, इसका भी एक डर होता है. तो पीपल सफर फ्रॉम बाथमोफोबिया. Batrachophobia, batrachophobia is the fear of amphibians. Cyberphobia, cyber means computers and cyberphobia is fear of computers. Cynophobia, fear of dogs. Cyno is referred to dogs. और कुछ लोगों को जिनको
डॉग से डर लगता है, they suffer from साइनोफोबिया. डेंटोफोबिया, डेंटिस्ट से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता है. तो फियर ऑफ डेंटिस्ट इज डेंटोफोबिया. ग्लॉसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, भीड़ के सामने, ऑडियंस के सामने, जिसे हम स्टेज फियर भी कहते हैं, राइट? तो स्टेज फियर या फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक इज ग्लॉसोफोबिया. आइट्रोफोबिया, आइट्रोफोबिया इज फियर ऑफ डॉक्टर्स. बहुत सारे लोगों को, स्पेशली बच्चों को, डॉक्टर से बहुत डर लगता है. तो आइट्रोफोबिया is the word. Insectophobia, fear of insects. Necrophobia, fear of death or dead things. बहुत सारे लोगों को डेथ या डेड, मरी हुई चीजें या मौत से डर लगता है. They suffer from necrophobia. Nosocomophobia, fear of hospitals. Yes, बहुत लोगों को हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है. Nosocomophobia. Phobophobia, fear of phobias. Okay, डर से भी डर लगना, उसको फोबोफोबिया कहते हैं. मतलब डरने से भी डरना, डर से भी डर लगना, दैट इज फोबोफोबिया. टैकोफोबिया इज फियर ऑफ स्पीड. किसी भी, कोई भी चीज स्पीड में, अब कार में है तो बहुत तेज स्पीड में, उससे डर लगना, दैट इज टैकोफोबिया. Verminophobia. Verminophobia is related to germs. Fear of germs, bacteria, viruses, that is verminophobia. Vycophobia. Vycophobia is fear of witches and witchcraft. Witches, bhoot, bhootniya, okay, witches and witchcraft. जो भूतनिया होती हैं, right? So that is the fear of Wiccaphobia, fear of witches and witchcraft. Zoophobia, कुछ लोगों को एनिमल्स, सारे ही एनिमल से डर लगता है. So that they suffer from zoophobia. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनिमल्स नेचर में, एनवायरमेंट में हमारे नहीं होंगे. फ्लोरा एंड फौना, तो फौना नहीं होगा तो कैसे नेचर चलेगी, राइट? बट कुछ लोगों को हर एनिमल से डर लगता है, so they suffer from zoophobia. हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी, वाटर, फियर ऑफ वाटर. बहुत लोगों को पानी से डर लगता है. हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस, बीमार पड़ने से डर लगना कि मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा. तो कुछ लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया होता है, दैट इज फियर ऑफ इलनेस. एमेक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार. कार में राइड करने से जिन लोगों को डर लगता है, they suffer from emexophobia. एरोफोबिया, प्लेन में या फ्लाइंग से डर लगना. प्लेन का डर बहुत सारे लोगों को होता है, एरोफोबिया. एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द का डर लगना, ये दर्द हो जाएगा, वो दर्द हो जाएगा मेरे, ये, सो उसका भी डर लगना. दर्द नहीं होना, पर दर्द का डर लगना. सो फियर ऑफ पेन is algophobia. And look at this word, hippopotamonstrous squibdaliophobia, fear of long words. ये भी एक वर्ड है आपका इंग्लिश में. hippopotamonstrous squibdaliophobia. hippopotamonstrous squibdaliophobia is fear of long words. तो लास्ट टाइम एक बार और बोलेंगे. hippopotamonstrous squibdaliophobia. Yes, I got it right. So
That is fear of long words. लंबे words का डर लगना. All right, and we come to the end of our session on Roots 3, Part 3. I hope you liked my session and you really enjoyed this session as much as I did. So if you've liked it, please click on like, please share it and subscribe it on my referral code, which is SUMATI. Don't forget to click on like, share and subscribe on the given code SUMATI, Sumati. Till then, take care. See you very soon in my next session. Be safe and happy learning. Bye.